अस्सलाम हमजा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन, आप सुनाएं। हमजा ये क्या है? ये वर्दी ये मेरी वर्दी। अच्छा जी, हमजा हमें ज़रा हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं। मैं वर्दी के बारे में ही बता रहा था कि ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड भी यही है, मेरा ड्राइवर लाइसेंस भी यही है, और पुलिस वाला रोके तो बस कोड दिखाते होते हैं, टाई दिखाते होते हैं। मेरा नाम हमजा है, मोहम्मद हमजा। आई एम अ लॉयर एंड आई एम ऑल्सो अ कॉमेडियन। You're a lawyer? You're actually a आई एम lawyer? एक्चुअली अ लॉयर, यस। आई वाज बिल्डिंग अप टू दैट, यस। I thought ये ऐसे ही था। कोट पहन के आ गए। अच्छा, ठीक है। And Hamza, where have you studied from? How was your childhood like? I studied, I did my bachelor's in law at home. I quit university in my first year. My childhood was pretty simple. It was it's an unknown school, so I wouldn't say the name. Most of you probably don't know it. But it was a very wholesome sort of a school, nothing that toxic or any sort of that sort of thing to traumatize me or to become a part of my personality like that. But when I was in my university, after a year, I quit that university because I wanted to focus on making comedy sketches full time. Okay. And were you always like this? मतलब हमेशा से वो जो लोग बहुत ज़्यादा जुगते मारते हैं ना, उनको कहते हैं आप फैसलाबाद से, तो आप फैसलाबाद से? नहीं, मैं फैसलाबाद से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एक्चुअली सियालकोट से हूँ, और जो भी सियालकोट से उसको पता होगा कि आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ जोक, दिस इज जस्ट हाउ It's just a part of your personality. It's just how I am. हाँ, सियालकोटी, born and raised in Lahore, is a pretty chemical combo. mixture. Yes, it is. Okay, Yes. okay. All right. And so how has it been making comedy? And और plus साथ आप law कर रहे हैं, you're gonna be a lawyer soon, you'll be practicing soon. तो दो चीज़ें बिल्कुल वो है, like Polar opposite. बिल्कुल। तो कैसा जा रहे हैं ये और ये साथ में? Honestly, never really forced it. I could say कि I do both of these things and I delve into two pies at the same time. But it all just, it's all pretty natural because I didn't really start making out videos as a career. I just did it at first for my cousins and then for my friends in a friend group. And then it just became a thing. So again, that's God-given. Influencing and all this became a thing in the meanwhile, probably in 2017-18. So I am glad, alhamdulillah, I was a part of online presence. So I could, be a part of that. Yeah, paise ban rahe hain to banao. But I wasn't doing that necessarily. I was just making videos. Okay. Or do you get joked about at work, like with your loss? कि अच्छा ये कैसा है, ये भी है. हाँ, it's pretty weird because for you to say that it's you and I sitting over here in this bubble of the world, but Mall Road and Lahore and the thought I've process. seen the kacheri, so I've been to courts and stuff, and I've seen the culture and the अजीब तरह का environment होता है बिल्कुल. तो वो ठेठ लाहौरी environment है, like especially मैं बात ये कर रहा था कि the thought process that my father comes from, it's pretty weird to even perceive के, I wouldn't call it fame, but even perceive कि someone is recognizing me and I can't really explain what I do to him or anyone at the office. So for a good while, for like as I mentioned, I've been doing it for 12 plus years. For a good while, no one really knew. My mother knew when I was a kid that I used to make videos on her phone, but no one really knew that much. So in Corona times especially, ज़रा सा boom आया online हर बंदे का, तो उसके बाद से alhamdulillah people started recognizing me as well on the streets, like more common especially in Lahore. तो that was pretty weird for them. It's pretty fun for me. जब अजीब सा कोई रिएक्शन होता है, मुझे मज़ा आता है अंदर से. मैं सिविल कोर्ट में एक दफ़ा खड़ा हुआ था और दो हथकड़ियों पे बंदे चलते हुए आ रहे. अब वो मुजरिम है और आप सोचते हो कि यार कई जगह होता है आपका मीटर ऑन होता है कि यार ये बंदा शायद हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप डिफेंस में कहीं जाते हो और मेरे जैसे बंदे के लिए वहाँ पे चलो होता है कि यार चल एक आध बंदा पहचान ही लेगा, अच्छा फील हो जाएगा, वैलिडेशन हो जाएगी. कुछ जगह होती है जब आप परसीव भी नहीं करते. तो मैं कोर्ट में चल रहा था अपने अब्बा के साथ, तो ऐसी एक बंदा, उसने कहा मैंने आपको कहीं देखा है, मुझे नहीं पता कहाँ देखा, लेकिन मैंने आपको कहीं देखा है. और साथ तस्वीर भी खिंचवा के गया. एंड ही वाज ऑल व्हाइल ही वाज चेन्ड टू अ पुलिस ऑफिसर. So that was pretty fun to see the reaction on my dad's face. I was just saying, क्या करते हो तुम? ये तुम मुजरिमों के साथ क्या करते हो? और आपने कहा मतलब आपकी अम्मा को पता था कि आप वीडियोस बनाते हैं, पर एक तो ये कि डू यू वांट टू टेक द लॉ थिंग एज अ प्रोफेशन और डू यू वांट टू टेक दिस comedy thing as a profession?
देखें मतलब आप खुद भी इससे रिलेट कर सकती होंगी, जब हमने 2 साल या 1 साल पढ़ाई कर ली होती है, बल्कि काफ़ी हद तक पढ़ाई कर ली होती है, आप घर वालों के पैसे हलाल ही करना चाह रहे होते हो, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने को बहुत बड़ी कुर्बानी की या इस तरह किया। आई ऑलवेज़ वांटेड कि मैं अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करूँ और ये भी चलता रहे तो चलता रहे। पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई इवेंचुअली और ये भी चलता रहा और ये बस चलता रहेगा हाँ इसी ये लाइक आई वांट टू परस्यू बोथ। आई थिंक एवरीवन शुड परस्यू। आई डोंट केयर इफ़ यूर अ कुक और दूध वाला, आप दूध वाले भी रह सकते हो और आप वो दूध बनाने वाला टैलेंट यूट्यूब पे भी दिखा सकते हो। यू कैन डू बोथ। हाँ ट्रू, पर लेट्स से कभी आपको दोनों में से एक पास चूज करना हो। Oh, for making videos for sure. Okay, and what do you think would be your family's reaction to it? उनका रिएक्शन यही होगा कि यार हंसाने से घर नहीं चलता, लेकिन हाँ, if you can make money out of it, kids, if you can make money out of anything, no one cares about anything. They'll stop asking questions. Okay. So, what do you think about marriage and matrimonial apps? Marriage and matrimonial apps in Pakistan. I think it's pretty great because हराम वाली तो बहुत चल रही हैं, तो हलाल वाली भी चलनी चाहिए, उसकी भी बहुत मार्केट है। वो हलाल वाली हराम मार्केट में आके कह रही है कि भाई हम हलाल हैं, यहाँ पे मैं आई नहीं हूँ। हुकअप ऐप पे आके कह रहे होते यार हुकअप्स नहीं करने, कि शादी करनी है तो कर लो। It's a pretty weird coincidence I was mentioning to her. I went to the office. I hadn't even checked her WhatsApp because she sent me the location, and I remember something vaguely दिल का। तो बैठा हुआ ऑफिस बॉय एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट, यार मैं डाउनलोड कर ली ऐप। मैं क्या है दिल क्या है, दिल का रिश्ता क्या दिल का रिश्ता की ऐप। मैं ये क्या है? कहता है यार आपस से हंसी जानो, 4 बॉयज आपस में हंस रहे थे। तो एकदम मेरे जहन में निकली कि मैं तो उधर इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। चल रही है चल रहा है। टारगेट ऑडियंस सही पहुंची। टारगेट ऑडियंस क्या है? शफीक एसोसिएट्स का ऑफिस बॉय। ग्रेट। नहीं सी देखिए, अब गरीबों को क्या दिल लगाने का हक नहीं। तो और क्या, डिफेंस के बच्चे को आपने मुझे ऐप या दिल का रिश्ता पे ऐप लाना, बिल्कुल ठीक ऑडियंस है। मैं तो कह रहा हूँ सक्सेसफुल। चले हम हर एक को केटर करते हैं ना। सी हम वही वाली आपकी बात होगी कि हलाल हराम वाली चीज़ें। हलाल डेटिंग, देयर इज नो सच थिंग एज हलाल डेटिंग। It's either marriage or you're dating. So there's one thing. To give you a response that you can actually include in the video is I think it's a pretty good idea because dating is generally a pretty taboo thing in Pakistan. And as is with everything taboo, narcotics, anything, I'm not justifying it, but we need to acknowledge that it still happens. Exactly. And if there's an authority that is taking control of how it is operated, that is fine. Yeah, morals are everybody's own. I think it's a good idea. Okay. Any challenges that you faced? खेलें आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके वर्क में, बिकॉज दोनों चीज़ें बहुत ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। तो अगर आप कहें कि बीइंग अ कॉमेडियन आपको अपने ये लॉयर वाले करियर में फेस करने पड़ते हैं, और बीइंग अ लॉयर आपको वो अपने उधर फेस करने पड़ते हैं ऑपोजिट जगह पे। तो डू यू रिमेंबर एनी चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? हाँ बिल्कुल, आप सही पहुँची हैं। challenges as in for example, having an online identity, especially a comedic identity, is nothing that you can first of all put on a CV. Yeah, it's no skill that you can explain to anyone, especially in Pakistan. It's no skill that you can explain to anyone, let alone your parents. That is a pretty weird thing to do. Again, as I said before, क्या जब आप पैसे कमाने लग जाते हो तो कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई आपको तंग नहीं करेगा, और आपकी इज्जत भी सब करेंगे, और हर बंदा एंड पे इज्जत ही मांग रहा होता है। बट हाँ, जब तक मैं पैसे नहीं कमा रहा था, आई वॉज स्टिल डूइंग इट, एंड टिल देन इट वॉज प्रिटी चैलेंजिंग बिकॉज अब तो एटलीस्ट आई कैन foresee कि यार अच्छा, आई एम ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ दिस एंड देन आई एम गोना reinvest into this and do blah blah blah. When I was a kid, I wasn't doing any of that. So understandably, it was hard for my parents to see that I'm not focusing on studying and I'm just doing this. So in my school life, I was pretty fine, but by the time I was in college, I was pretty focused on making anything that happened. I would just make a skit on it and post it. And that cost me a lot of bullying as well, just in my college, not in my school life. School life was pretty good, friends were good. LGS was my college life, though it was a drastic change in environment for me. So that was a bullying point in my life. Uske baad bhi I kind of just like the confidence came with it. And obviously when you do something, you see the results, and when people see the results, they stop saying anything to you. They want to be on your side. Was that the reason that you quit it? University, yeah. Okay, but so, okay, what was the moment that you decided that okay, bas enough of the bullshit, I'm quitting this?
Yeah, actually, quitting university was not solely that, oh, I want to do YouTube and fly. Corona times hard on everyone, every family, same as mine. My father was also running for elections at the time, and he lost the first year. He won the second time, but he lost the first year, and that cost again us a lot, and it was a pretty devastating time. तो मैं अभी भी यही कहता हूँ कि यार उस टाइम पे भी मैं जब अभी से शायद बहुत ज़्यादा ही कमा रहा था, और उस टाइम पे मैं जब जितने कमा रहा था वाज ऑल गॉड गिवन, कि बस कहीं से भी आ गया, उस टाइम के लिए ज़रूरत थी तो आ गया. आई वॉज नॉट आस्किंग एनी वन फॉर मनी एंड आई वॉज स्टिल मेकिंग वीडियो. तो वो सारा टाइम चलता रहा. बस दैट वॉज अ चैलेंज बिकॉज उस टाइम पे आई हैड टू मेक अ चॉइस. आई हैड टू आइदर फुली फोकस ऑन कि यार अच्छा मैंने एक अच्छा वकील बनना है और मैंने इससे पैसे कमाने हैं, पहले साल में मैंने जी किसी के लिए वो काम कर लिया, ये वो कर लिया, या फिर मैंने फुली ऑनलाइन जो मैं रक्स कर रहा हूँ उसके अंदर से पैसे कमा लेने. तो आइदर वे ये चॉइस आ चुकी हुई थी. तो तब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ने का इसलिए सोचा था बिकॉज आई वाज लाइक आई स्टिल वांट टू डू बोथ. आई एम जस्ट गोना फोकस ऑन हाउ आई एम गोना मैनेज माई टाइम. तो गोइंग टू द यूनिवर्सिटी वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ माई टाइम. नो वन गोज टू द यूनिवर्सिटी टू स्टडी. Everybody goes to university to either do drugs or hang out with their friends or just like and that's how how university should be as well. आप यूनिवर्सिटी के 9-10 लाख फीस सिर्फ पढ़ाई के नहीं दे रहे होते, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मेरी यूनिवर्सिटी बहुत फजूल थी और वो ठोकर पे लाहौर की यूनिवर्सिटी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो पढ़ाई आपने करनी है, आप घर बैठ के कर सकते हो. दैट इज़ वाई आई क्विट यूनिवर्सिटी एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी बिकॉज आई स्पेंड द टाइम आई वॉज वेस्टिंग ऑन मेकिंग वीडियोज़. सो आई एम हियर राइट नाउ. All right. So, what is the one thing that you remember that got you super excited in this, YouTube thing of yours? Super excited. This is way before I could actually even say ke, oh, I am famous on the internet, ma. But I had 300-400 followers. I was at Coke Fest and this guy, he's a musician now, Madlock Kilani, मैं उसका नाम भी ले लूँगा. This dude just randomly passed me by and I was a kid at the time and he just patted me on the hand and said, I saw your video, it was pretty good. And that was the first moment I was like, I still think of it to this day, that even though कि मुझे ये नहीं था कि मैंने इस बंदे के लिए बनाया, but that probably did have a lot of effect in pioneering whatever I did. So when you go around and say something even such of such a small nature to someone, it goes a long way. Exactly. Okay, so Hamza, दिल का रिश्ता पे आप दिल का रिश्ता कब बना रहे हैं? दिल का रिश्ता पे मैं दिल का रिश्ता कब बना रहा हूँ. अभी आप जाएँ, मेरे 2 ऑलरेडी अकाउंट बने हुए हैं. एक फ़ोन से बना है, एक फेसबुक पे कर रहा है. So what are your plans ahead? My plans ahead, I'm gonna plug in here as well. My plans ahead are basically ever since I was young, I've been watching a lot of comedy things, and when I was in school and college, my friends, I used to show them these sketch shows and they still say कि यार तू बहुत अजीब चीज़ें देखता है ऑनलाइन ना. तो मेरा तब भी आर्ग्यूमेंट ये होता था कि आई फील लाइक पाकिस्तान में स्पेशली कॉमेडियंस तो जनरेशन से ही हमेशा हमारे पास बहुत अच्छे रहे हैं. तो इनेटली पाकिस्तानीज आर जनरली वेरी फनी एंड व्हेन वी आर फनी वी हैव एन ऑडियंस दैट कैन परसीव जोक्स दैट आर प्रीटी फनी. सो वी हैव अ ग्रेट ऑडियंस. अगर आप इंडिया भी देख लो तो तन्मय भट्ट वगैरह, ऑल ऑफ दीज गाइज आर टैपिंग इनटू द पाकिस्तानी मार्केट बिकॉज वी हैव अ ग्रेट मीम कम्युनिटी, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ग्रेट वे टू टेक दैट जोक एज वेल. आई फील लाइक I've always wanted to actually tap into that, but right now I have a script, I have a show, and now is a great time to for people to come out with even bad shows. Write your scripts, come out with stuff. Indians are way ahead of us and we need to be more confident with ourselves. That's what I'm doing as well. I know it's going to be devastating because I'm pretty bad at directing, scripting, writing, all of that stuff. I have one skill and it's funny lines, 1 or 2. So I can focus on that, but everything else I have to do it because हमें घर से स्टार्ट करना पड़ेगा. चल, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. हमजा, कोर्ट में आपको बड़े केसेस इस तरह के अजीब से फ़नी से देखने को मिलते हैं, तो आपको कोई ऐसा केस याद हो जो आपके बैठ गया दिमाग में कि ये क्या चल रहा है? केसेस तो यूजुअली थोड़े से सैड और हम्बल करने वाली होते हैं. ऑनेस्टली जब आप फाइल खोलते हो तो आपको पता चलता है मुल्क में मसले कितने. लेकिन जनरली हाई कोर्ट में और वैसे ही कल्चर में, लॉ के कल्चर में यहाँ पे बड़ी मज़े की चीज़ें हो रही होती हैं. एंड वन थिंग दैट हैपन्स मोर ऑफन देन नॉट इज़ यू सी अ कपल मेकिंग वन लास्ट रन फॉर इट. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ दिस वन कपल इन हाई कोर्ट वंस जो हाथ पकड़कर भाग रहा है और उनके पीछे पुलिस वालों का इतना टोला है और उसके पीछे उसके घर वाले और उसके पीछे उसके घर वाले, और ये चारों एक ही लाइन में भाग रहे हैं, मेकिंग वन फाइनल रन फॉर इट.
So it was very cute and wholesome to watch. तो यूजुअली इस तरह चल रहा होता है जहाँ पे कोर्ट मैरिज नहीं हुई होती, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने की मिलती। अच्छा, सो ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि वो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज के लड़का लड़की के पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे थे और दे वेंट फॉर द कोर्ट मैरिज। But again, I think this is so sad in our country कि बेचारे two people in love have to go through such humility और वो humiliation और वो सारी चीज़ें कि आप sorry, it's funny but it's also sad at the same time. One last question I would say. अभी आपका relationship status क्या है? Relationship status, it's complicated. अब्बा से छुपाना है या सच सच बताना है? It's complicated. अब्बा से छुपाना complicated. अच्छा, अब्बा से छुपाना complicated. अच्छा, and when do you plan to get married? I'm single, by the way. I was just kidding. And I plan on getting married when मेरे शौक पूरे हैं। जब आपके अपने शौक नहीं पूरे, आप शादी कर लोगे, फिर आप शायद बीवी के शौक पूरे करते रहो, या फिर आपके एकदम बच्चे हो जाएंगे, फिर आप उनके शौक पूरे करने में लग जाओगे, फिर आप सारी ज़िंदगी जब वो बड़े हो जाएंगे उनका चेहरा देख के आपको याद आता रहेगा कि यार मैंने वो गाड़ी नहीं ली थी, मैंने वो नहीं किया था। सारे माँ बाप ऐसे नहीं करते, और एक्चुअली अपने माँ बाप को जाके जब भी डालनी चाहिए ये बात सुन के कि यार वाकई उन्होंने जब एक पॉइंट पे बच्चे हो गए उन्होंने यही कहा होगा कि यार अब मेरा याशी का टाइम ख़त्म हो गया। तो हर बंदे को यही रखना चाहिए कि यार मतलब कुछ लोग कहते हैं प्यूबर्टी पे करनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि आपको इस पॉइंट पे करनी है जब आपकी शौक की प्यूबर्टी हिट कर दिया कि यार मैं अपने शौक जो रीचेबल थे, एक्सेसिबल थे, वो मैं कर चुका हूँ, छोटे मोटे कर लूँगा बच्चों के साथ, अब उनके करने हैं। तब बंदा शादी करे, बीवी के फिर शौक पूरे। एंड डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू गेट टू नो द पर्सन पहले से, या उसके साथ डिस्कशंस होनी चाहिए, मिलना चाहिए, बात होनी चाहिए, बहुत सी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जैसे फाइनेंसेस हो गए, बच्चे कब करने हैं, इस तरह की चीज़ें पहले बात होनी चाहिए या नहीं? हाँ, इस पाकिस्तानी आई बिलीव के वी बिलीव इन बोथ. More so now we are accepting of love marriages as well, but generally just in my opinion I believe कि knowing the person before the marriage can do wonders for the marriage, obviously, because as my parents always remind me, even though I tell them I don't want to get married for another 30 years, they say that you don't marry the girl, you marry the family, or you don't marry the guy, you marry his family. So you need to make sure कि you need to have those talks, you need to know what kind of person the other person is. So you know, as you said कि पहले बात करना और पहले थोड़े बहुत क्रूशल सवाल करना बहुत ज़रूरी है, एंड इट एक्चुअली मेक्स द लाइफ बेटर. यहाँ पे आते मसले डाइवोर्स वगैरह के, एंड दैट डिस्टर्ब्स फैमिलीज इन केमिकल प्रोपोर्शन, सो यू शुडंट डू दैट. एक और थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, सो हमारे यहाँ पे लव मैरिज की डेफिनेशन भी और है ना. गेटिंग टू नो द पर्सन इज़ ऑल्सो लेबल्ड एज लव मैरिज. आप एक अरेंज मैरिज में भी 2-4 दफ़ा पहले मिल लेंगे ना, तो आपको ऐसे होगा जैसे क्या लव मैरिज का टॉप. तो पसंद की शादी और लव मैरिज में भी अभी लोग फंसे हुए हैं कि क्या मसला है. वन लास्ट क्वेश्चन हमजा, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू यंग गाइज दैट वांट टू परस्यू कॉमेडी as a profession? To comedians I'd say don't go for the first joke that comes to your mind, go for the second joke that comes to your mind. It's always the better one. And just generally to people who are trying to make it online, whether it's through comedy or through anything, any talent they want to show it off, just be consistent. I give this advice to myself as well every day. Just be consistent with it. You don't have to be the best at it. 50% of success is just going there and being there. Opportunities भी खुलती हैं और आप टाइम के साथ साथ सीखते हो. तो just like don't focus on other people's stories. हर बंदे की अपनी स्टोरी होती है, जाके करो, थोड़ा थोड़ा बीज सो करो और वो फिर उगेगा with time. Damn it. Okay, Hamza, thank you so much. Best of luck for the show that you're working on. It was really lovely having you. The tea was pretty great as well. Yeah, thank you. Thank you. I'll see you in the next podcast. Tab tak ke liye Allah Hafiz.